Today we will learn about passing object as function arguments. Okay. Now, like in functions, we can pass arguments by value and by reference. Okay, like we had learned three types of function call. One was function call by value, then by reference, and by address. These were the three ways in which values or arguments can be passed to a function. Okay, so now we can also pass objects to a function, just like we were passing primitive data types to an object. Yeah, you can say integer or float values to a function. We can, in similar way, we can pass an object to a function also. So we will learn here calling a function by value and calling by reference or by address. Okay, so here what we will do, we will pass an object to a function. Earlier we were just passing an integer value or a character value or a float value to a function. So we will learn how to pass an object to a function, and then similarly on similar pattern we will learn how to return an object from a function. So means what we are trying to do is कि जैसे C में हम functions को कोई भी type की value send कर सकते थे, तो an object can also be sent as a parameter to a function. And we will learn two ways of sending an object to a function. One is by value and one is by reference. The concept of function call by value and function call by address या reference will remain same, जो हमने पहले functions में पढ़ा था. ठीक है. Then next we will be learning how we can return an object from a function also. So this can be easily understood through an example. Now I had already told you कि ये जो complex class वाला example है, this example we are going to take this example every now and then. So you should be you should try and write this program and run it, run and see the output, because आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, in all those chapters we will be taking the same example. Okay, now यहाँ पे हमने last class में पढ़ा था, we had designed the complex class, उसका हमने get data और show data function बना लिया था. Now today we will see how we can add two complex numbers. On the same pattern, on the same grounds, we can also subtract two complex numbers. So adding two complex numbers and subtracting two complex numbers is quite easy. Multiplication and division is a bit discussing later on. So right now we'll just see how to add two complex numbers, and similarly you can implement the how to subtract two complex numbers also. So now first, before going into the program, let us see add two complex numbers. Now suppose आपका जो complex number 1 है, suppose that is 5 plus 4i, and the second complex number is say 3 plus 2i. Now दो complex numbers को add करना is very simple. आपको सिर्फ real part को real part से add करना होता है. Means a complex number comprises of two parts, the real part and the imaginary part. Okay, so आपको दो complex number को add करने के लिए simply क्या करना है, real part को real part से add कर दो, and complex part को imaginary part को imaginary part से add कर दो, and you will get the result. So that means when you add two complex numbers, so 5 and 3 gives 8, and 4 and 2 gives 6. So the answer of this will be 8 plus 6i या 8 plus i6. Now whichever way you prefer. ये i लिखना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप differentiate कर सको between the real part and the imaginary part. So this is the real part. This 8 is your real part and 6 is your imaginary part. Similarly, subtraction करना भी आसान है. अगर हम यही same numbers को ले लेते हैं, 5 plus 4i, which is C1, and C2 is
3 + 2i, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. आई वांट टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज. सो सिंपली व्हाट वील डू इज 5 में से 3 माइनस करेंगे, सो you'll get 2, and 4 में से 2 माइनस करेंगे, we'll get 2. So the answer will be 2 + 2i. So that means सब्ट्रैक्शन करने में भी हमें क्या करना है, रियल में से रियल पार्ट को माइनस करना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करना है, and you will get the result of C1 minus C2. This is C1 minus C2, and this is C1 plus C2. So this is the you can say arithmetic on complex numbers. अभी हमने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा है. I'll tell you how to multiply and divide two complex numbers also. उसका जो कह सकते हो फॉर्मूला है, I'll make you write that, and on that basis you can implement those two operations also on the complex numbers. So for now we'll just take addition and subtraction of two complex numbers. Now यहाँ पे हमने last class में हम ये सब पढ़ चुके हैं. We have designed a class complex. So now what we are doing is, अब हम एक class बना रहे हैं जिसका नाम complex है. Now you need not create a class again and again. अब जब भी क्लास बनाने का यही फायदा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बनाने का यही फायदा है कि अगर आपने पहले से क्लास बनाई हुई है, you can always add functions to it. Okay, you need not create a fresh program again and again. So you can just add the new features in the class, in the existing class, and you can always enhance that class. तो अभी हमारी जो पहले हमने क्लास बनाई थी उसमें आप फ्लोट टाइप वैल्यू ली थी हमने, रियल एंड इमेजिनरी. ओके, नाउ फ्लोट हमने इसलिए लिया जिससे कि अगर हमें जो हमारी रियल इमेजिनरी वैल्यू अगर हमारी फ्लोटिंग टाइप है तो वो भी हम कंसिडर कर सके. Now we had only written get data and show data function earlier. Get data function से हम input करा रहे थे real and imaginary part को, और show data function से we were displaying the complex number. ठीक है. Now in this program we will be adding one more function, that is sum. हम एक सम फंक्शन ऐड करेंगे जिससे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जा सकता है. ऑन सिमिलर ग्राउंड्स यू कैन आल्सो क्रिएट अ फंक्शन फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो. सो राइट नाउ वी जस्ट टेक सम फंक्शन इनटू कंसीडरेशन. बस आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है दो से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो प्लस की जगह ऐड करने की जगह यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स. The real number को real part को real से subtract कर दोगे, and imaginary को imaginary से, and you'll get the result. So this much part of the program we had already written. ये get data हम already लिख चुके थे. Get data function में आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस real and imaginary part को user से input करा रहे हो. Okay. Now when you need to add two complex numbers, जब आप दो, जैसे हम add function बनाते थे C में, अगर हमें एक फंक्शन बनाना है ऐड टू नंबर्स, तो उसका प्रोटोटाइप कुछ ऐसा होता था, int a, int b. ओके, सो a and b आर टू नंबर्स दैट हैव टू बी एडेड, एंड ऑब्वियसली जब आपका दो नंबर्स ऐड कर रहे हो इंटीजर टाइप, तो रिटर्न टाइप भी उसका क्या होगा, int होगा. सो दिस इज द प्रोटोटाइप फॉर ऐड फंक्शन व्हेन यू आर एडिंग सिंपल टू नंबर्स एंड दोज नंबर्स आर ऑफ इंटीजर टाइप. ठीक है. अब अगर आप इसी तरह से लिखते हो फ्लोट ऐड से फ्लोट a, फ्लोट b, तो अब इसमें क्या होगा, नाउ यू आर एडिंग टू, यू आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन ऐड, एंड दिस टाइम द आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ फ्लोट टाइप. तो दो फ्लोट नंबर्स को आप ऐड करोगे या दो रियल नंबर्स को ऐड करोगे, तो आपका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, फ्लोट टाइप होगा. ठीक है. तो अभी फिलहाल हमारा ये फंक्शन जो है, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. अभी हम रिटर्न टाइप वाला भी देखेंगे. सो हियर दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, एंड ये हम क्यों लगा रहे हैं, जब भी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, you need to specify the class along with the scope resolution operator. तो इससे ये पता चल रहा है कि some function
इज यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं. ओके, now you can define the function within the class also, but in most of the examples from the previous classes also we have seen कि हम सारे functions को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर और फंक्शन को डेफिनेशन हम क्लास के बाहर देते हैं. ठीक है, तो जब भी कभी हमें फंक्शन को बाहर डिफाइन करना होता है क्लास के, तो वी हैव टू मेंशन कि गेट डेटा, एंड वी पुट दिस टू टेल कि गेट डेटा फंक्शन बिलोंग्स टू द complex class. So similarly, इससे क्या हो रहा है, sum is the name of the function. This is the name of the function. This is the name of the class. This is the scope resolution operator. This void is the return type. तो अभी हम वैल्यू कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वहीं के वहीं उसको कैलकुलेट करके प्रिंट करा देंगे. एंड दीज टू आर द फॉर्मल पैरामीटर्स पास्ड टू द फंक्शन. और ये दोनों पैरामीटर्स कैसे हैं, दीज आर objects of complex class. Now why they are objects of complex class? Because यहाँ पे हम दो complex numbers को add करने का function बना रहे हैं. Okay, earlier I told you कि अगर आप दो integers को add करते हो तो you pass two integer parameters. If you add two float numbers, then you pass two parameters of float type. अभी यहाँ पे हम दो objects pass कर रहे हैं, both are of complex type. So the parameters here are also complex type. ठीक है, तो ये पूरा आपका ये जो लाइन है, दिस इज द फंक्शन हेडर. यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फंक्शन हेडर. फंक्शन को हम बहुत डिटेल में कई बार पढ़ चुके हैं. सो आई हैव जस्ट मेंशन्ड, जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर, आई हैव जस्ट मेंशन्ड इस लाइन में कौन सी चीज क्या से कर रही है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर डूइंग इन द फंक्शन. वी आर जस्ट सेइंग रियल पार्ट इज इक्वल टू C1 डॉट रियल पार्ट प्लस C2 डॉट रियल पार्ट. अब सी जैसे अगर हमने कहा C1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4i एंड C2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i. ओके, तो यहाँ पे जब C1 पास होगा, C1 यहाँ पे पास होगा ऑब्जेक्ट, दैट विल बी 5 प्लस 4i एंड C2 विल बी पास्ड एज 3 प्लस 2i. ठीक है, तो इसमें से जो 5 है, दिस इज द रियल पार्ट एंड 4 इज द इमेजिनरी पार्ट. एंड सिमिलरली यहाँ पे इस C2 में दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर 2 इज योर इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देते हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट से ऐड कर देते हो, एंड दैट इज हाउ यू गेट द रिजल्ट. तो हमने लिखा C1 रियल पार्ट या रियल जो भी हमने लिया इज इक्वल टू C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल, एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू C1 डॉट इमेजिनरी प्लस C2 इमेजिनरी. ओके, तो अब क्या होगा इसका मैं बताऊंगी आपको. ये रियल और इमेजिनरी किसके रियल और इमेजिनरी है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, दोनों रियल पार्ट्स C1 और C2 के रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे. सो दैट मींस 5 and 3 विल बी एडेड. सो दिस रियल पार्ट विल कंटेन द वैल्यू 8 एंड द imaginary part will contain the value 6. 4 plus this is 5 plus 3 is equal to 8 and this is 4 plus 2 is equal to 6. ठीक है, तो ये हो गया आपका सम फंक्शन. नाउ उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यू हैव रिटन द आउटपुट फंक्शन. आउटपुट फंक्शन में सिंपली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में प्रिंट करा देते हैं. मींस a plus ib फॉर्मेट में you print the number either in the format of a plus ib या a plus bi. Both are correct, whichever you feel you can use. Okay, तो ये हो गया आपका, आपने functions को define कर दिया. Now the class is over. अब हमें क्या करना है, इस function को, sum function को main class में call करना है. Okay, so let's see further.
अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर 3 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए, x, y एंड z। जैसे आप सी में प्रोग्राम लिखते थे, 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखते थे, तो यू हैड टू डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स a, b एंड c, ठीक है, और आप लिखते थे c इज इक्वल टू a प्लस b। तो सिमिलरली मे बी x इज योर x एंड y आर योर 2 ऑब्जेक्ट्स which you want to add, and z में you will store the result. Okay, तो हमने लिखा enter the first complex number x dot get data। तो x में क्या आ जाएगा आपका, x is your first complex number। ऐड करने के लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत है, so x is your first complex number। Similarly y is your second complex number। ये दोनों आप गेट डेटा की हेल्प से यूजर से इनपुट करा लोगे। नाउ कॉलिंग द सम फंक्शन, नाउ सी दिस केयरफुली। सम फंक्शन किसका फंक्शन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्लास। ओके, सम फंक्शन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कॉम्प्लेक्स। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कभी भी कोई भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए उसी क्लास के एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, एंड यू कैन नॉट कॉल अ फंक्शन ऑफ अ क्लास इंडिपेंडेंटली। यहाँ भी अगर आप देखो, यहाँ आप x को यूज कर रहे हो गेट डेटा फंक्शन को कॉल करने के लिए, यहाँ पे आप y को यूज कर रहे हो टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन। नाउ द ऑब्जेक्ट विच कॉल्स द फंक्शन ऑफ अ क्लास इज नोन एज द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की मदद से आप क्लास कॉल करते हो, दैट इज नोन एज द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट और द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी आप क्लास के फंक्शन को डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते हो। फॉर सेफ्टी पर्पसेस द फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन ओनली बी कॉल्ड थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, एंड सिमिलरली the data members of a class can only be accessed from within the functions of a class। तो इससे दोनों ही चीजें से, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, z dot, I'll write it here, z dot sum x comma y। now here z is your invoking object, ठीक है, and x and y are your parameters passed, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। x and y are objects of complex class, ठीक है, and these are the parameters passed। जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, also known as actual parameters। ये सब हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। so x and y are the two objects, the two complex numbers to be added, and z is the invoking object and sum is the function about which we are talking about। और इस सम फंक्शन के अंदर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेसिकली ऐड कर रहे हैं। नाउ एज सून एज दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, this x object will be passed in this c1 and y object will be passed in c2, ठीक है। तो होगा क्या, c1 डॉट रियल में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x का रियल और y का रियल ऐड होकर के रियल में आ जाएगा, एंड x का इमेजिनरी एंड y का इमेजिनरी ऐड होके इमेजिनरी में आ जाएगा। नाउ ये किसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, this we are talking about the invoking object। ये किसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। तो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, z। तो z के रियल पार्ट में दोनों x का रियल पार्ट और y का रियल पार्ट ऐड होकर के स्टोर हो जाएगा, एंड z के इमेजिनरी पार्ट में x एंड y का इमेजिनरी पार्ट ऐड होकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड then what we are doing, then we are saying x dot output, y dot output हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है,
मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले करा रहे हैं, उसके बाद सम को भी प्रिंट करा रहे हैं. सो वी आर सेइंग z डॉट आउटपुट, क्योंकि से z में हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है एंड वी आर डिस्प्लेइंग द आउटपुट. नाउ व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, वो सबसे पहले आपसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मांगेगा. सो यू आर एंटरिंग नंबर्स. पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा x, सपोज इज 4 plus 2i, and y is 3 plus 4i. These are the two complex numbers x and y, the first complex number and the second complex number. ये दोनों objects आपके sum function को parameter की तरह. Now these are objects. So this example is just to show that जैसे कि दो integers pass किए जा सकते हैं, दो float pass करे जा सकते हैं, दो characters pass किए जा सकते हैं. Similarly, you can also pass two objects to a function on the same grounds. So x and y are two objects of complex class which are passed to the sum function. And सबसे पहले वो प्रिंट करेगा फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में प्रिंट करके बताएगा. एंड देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 7 plus i6. Now if you add this, 4 and 3 will be 7, 2 and 4 will be 6. So 7 plus i6 will be the result of the addition या sum of two complex numbers x and y. So through this example, we have just written a simple function. We have added a function sum in the complex class in which we are trying to add two complex numbers. अब इसी grounds पे आप subtraction का भी function लिख सकते हो. Subtraction के function में आपको कुछ खास नहीं करना है. आप यहाँ पे sum की जगह you will keep the name of a function कुछ और रख दोगे. Maybe you will keep the name of the function as subtract, and बस यहाँ पे आपका प्लस की जगह you will make changes to minus, बस. And that's all. ये आपका function क्या करेगा? As I told you कि दो complex numbers को subtract करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले के real part में से second के real part को subtract कर देते हैं. So you get the resultant real part. And similarly पहले नंबर के imaginary part को आप subtract कर दोगे, you will get the resultant imaginary part. So on the same pattern you can just add and subtract also in this class, and you can add and subtract two complex numbers using this concept. Okay, so just try out this example, and in the next class we will see how to अभी ये example था आपका, write a program which reads two complex numbers and calculates the sum of these two. And the topic was we can pass objects to a function like we can pass other types of values also. Okay, now we'll extend this in the next class. We will extend this example, and we will extend this example so that हमारा जो function है वो कोई value भी return कर सकेगा. अभी अगर आप यहाँ पे देख, some function is returning a void type value, returning any value. तो हम function को कैसे call कर रहे हैं? z dot sum x comma y. We are calling the function in this way. Z is the calling object, and x and y are passed as parameter, and there's no return type to this function. Sum function कोई value return नहीं कर रहा है, और जो x and y का result है that is getting stored in z itself. So in the next class we'll see how to return, and means we'll see in the same example we'll see how a function can return an object also, like it can return any other type of values. So just try out this example. So I'll end this class here only for today.